Yeah, now can you hear me? Now can you hear me? All the students could enter. Shiny could enter, I could see. Other students, other 5 students. Sneha, Shiny and Sneha are there. Other students, if you are there, please write down so that I can understand that you are there. GV Vlogs, Sneha Chanda. I can see 3 students. Shiny, Sneha, and GV Blogs. What is your name? Please write down. GV Blogs. What is your name? Please write down. I don't see Shubhamita and Shayantika. I'd like to see Shubhamita and Shayantika. Am I audible right now? Rajat, please tell me. Hello, am I audible? Yeah, I am audible. This is your first time in Streamlabs, maybe that's why it is taking a little bit of time to, settle down. All the students are there or not, I don't know. Shiny is there, Sneha is there, some Rajat is there. GV Blogs, who are you? What is your name? Shubhamita is there now. I get Shubhamita. There should be another student. Okay, anyway, you share the link among yourselves. I hope let's do this class in this way. As because this is the biology introduction for class 12. And like I said before, what is important for class 12 biology is that class 12 biology has different sections. First section is about the reproduction, second section is about genetics and evolution, third section is about human welfare, about microbes and about health and diseases. Fourth unit is about biotechnology, that is cutting and editing of genes, and fifth unit is about ecology. So ecology is very interesting, but we will study that at last because it is not that hard also. And whatever, I hope that all the students are doing the class. I see that there are 4 people online. Sometimes in Streamlabs it doesn't show 5 के जगह में 4 के जगह में 5 दिखाता है. Rajat is there, Shayantika is there, Shubhamita is there, Sneha is there, GV Blogs, one student is there, Sneha Chanda is there, Sneha Chanda and Shani is there. Though Dipan should been there, no? Dipan should have been there. Anyway, so first of all, my board and everything is not ready yet. I hope everybody can hear me. If there is any doubt, if there is any problem, if you cannot hear, if you are missing out, then please text me in WhatsApp. It will come in my notification bar. I can see that if you are facing problem. Let's do this class in this way, because if I focus this, this Streamlabs has a very good quality. If I focus this on the board, nice quality video will be made. Then from Zoom or Google Meet, whatever it is. Today I am talking, my board is not ready yet. Today I am just, I will teach you face to face only. And I hope that you will understand. So whatever I was saying that biology has these 5 sections. So where should we begin class 12 biology? Look, why my logic is that to begin class 12 biology is from molecular biology or molecular basis of inheritance is that because whatever is happening in biology is the study of life science
is happening primarily because of enzymes. I believe like that. Primarily because of enzymes. Why? Because what is cell? Cell is a structural and functional unit of life. In the cell, what is happening? Lot of chemical reactions are happening. Now, these lot of chemical reactions that are happening inside the cell helps us to live. Be it a unicellular microorganism, be it a multicellular human body, the chemical reactions that occurs inside the cell, inside the different types of cells that are present in our body, these chemical reactions are actually, in reality, are the parts of metabolism, respiration, excretion, then nutrition, digestion, everything that is happening, the action of hormones, everything. And these chemical reaction inside the cell occurs. Why and how? These chemical reaction occurs because of the enzymes, because of the proteins that are present. Proteins are only acting as enzymes. Yes, RNA also can act as enzyme. That information you should keep in your mind, that RNA can also act as enzyme. That is true. In that case, it is known as ribozyme. But most of the chemical reactions in our body are catalyzed due to enzymes or by the enzymes. So what is the meaning of catalyzed? Catalyzed means making the activation energy of the reaction less. So what is that? Making activation energy of the reaction less. It is just as if suppose you are trying to cross a hill. A hill is there. I'll just make you. There will be diagrams regarding it. There will be more in depthful studies are there. Diagrams are there. But first you understand. I'm just introducing this to you. Suppose there is a hill. Okay. Now you want to cross that hill. Now what is this? Suppose a boy A is there. He wants to cross that hill. He is climbing that up and then going down. He is doing lot of energy kharcha in doing that. However, the other boy B, what he did is he took support of the Air Force and he called upon or booked a private helicopter and just crossed it. Or maybe what he did is he went around the hill through the ground and reached the other side of the hill. गोल करके घूम के चला गया. So these using of the helicopter or private helicopter to cross the hill very easily without expending the amount of energy it was supposed to expend, that is known as catalysis. Actually, if I go into the chemistry of it, when suppose two reactants react and form a product, the reactants react and they have to cross an energy barrier, okay, for the reactants to become products. Now, when they try to cross that energy barrier, what basically happens is that an enzyme comes, does the reaction in a different way, and they don't have to cross that energy barrier. This concept is known as catalysis or catalyst. Enzymes are biological catalysts. And what these enzymes do, they catalyze all the chemical reactions that occur inside our cell, and hence are the backbone of metabolism of our body. Now, what is the nature? What is the chemical nature of this enzyme? The chemical nature of this enzyme is proteinaceous. Just hold on a second, okay? I'll just be back. I'm sorry. Okay, so the thing is that, so what all this discussion I was doing,
What is the conclusion of this discussion? The conclusion of this discussion is that enzymes are proteinaceous in nature. They are they are proteins, actually, functional proteins that act as enzymes, and these enzymes catalyze chemical reactions in our cell. What is catalysis? Catalysis is the process of lowering down activation energy or lowering the energy barrier that the reactants have to cross to become products, and hence catalysis makes the reaction easier to happen. And if these catalysts were not there, many chemical reactions wouldn't occur in our cell so flawlessly, so easily that it occurs, and our life wouldn't be so, the way it is. So, in any living organism's body, these enzymes are very important. You have also learned in your lower classes that not only enzymes, not only proteins are the not only enzymes are the one which is proteinaceous, but also, just hold on, my birds are disturbing too much. You want to see my birds? Wait, I'll show you. They're disturbing too much. I'll put them in a. See them. They disturb too much. They quarrel all day. When I'm teaching, they are quarreling. So these are my birds. 2 pairs are there. See. Anyway, I'll come back to my lesson. I'll just do what? I'll put them in some other room so that they don't disturb. Okay, just hold on. Just hold on for a second. Okay, I have put the birds away, and anyway, so I was saying, what was I discussing? Anyway, so yeah, that is the thing. The enzymes are very important. Don't forget that RNA can also act as enzymes, ribozymes. Don't forget that. However, do you think that only enzymes are the proteins of our body? No, there are structural protein in our body. Our entire body structure is made up of protein. Inside the cell membrane, if you remember the structure of cell membrane is what? In RBC cell membrane, I think 52% protein is only there. Any cell membrane, lipid is there, and uske बीच में protein घुसा हुआ है. So those are structural proteins. Okay. They are not enzymes. They will not catalyze anything or do any kind of catalysis. They are not enzymes, but they are structural proteins. Proteins. Coming to proteins. This long introduction. Why, sir? To make you understand the importance of proteins. Now, with this lecture of mine, with whatever I have just, blabbered for 16 minutes, if anybody asks you these questions, you will be able to answer. Question number 1. What is the function of protein in our body? The answer is, proteins can act as enzymes. Enzymes are biocatalysts, catalyzes all the chemical reactions in our body. Number 2, proteins can also proteins gives us structural support of the body. Protein give us structural support of the body. Like, for example, in the cell membrane, there are transmembrane proteins embedded in the lipid. Lipid मध्य ढुकाना था कि lipid के अंदर घुसा हुआ रहता है. Proteins embedded in the cell membrane, which helps transport of substances, structural proteins. So this is the importance of proteins. That is what I wanted to make you understand. So this question you can answer. Then if anybody asks you, apart from protein, can anyone act as enzyme? You can answer yes, RNA can act as enzyme. What are they called? Ribozyme. This answer you can say. Then if anybody asks you what is catalysis, or what is the definition of catalysis, or why catalysis is required, why some reactions are catalyzed and why some reactions are not catalyzed. Okay, so that also you can
easily answer. Easily answer. Reactions which have low activation energy doesn't require any catalysis. Reactions which have very high activation energy, where the reactants need to become products, covering up a huge energy barrier. In that case, we require catalysis, and in any biological cell, this kind of catalysis occurs. Okay, by the proteins, by the enzymes. So this is the importance of the enzymes. You getting my point? This is the importance of the enzymes. This is the importance of the proteins. Fine, we can answer all these questions. We understood everything. But then, we'll also have to go little bit further now. What my main motto is to make you understand that, okay, we understand the importance of protein. বাট দিস ফাংশন অফ প্রোটিনের যেই ফাংশনের ব্যাপারে আমরা পড়লাম, এই প্রোটিনের ফাংশনটা এরকম যে প্রোটিন করতে পারে, মানে কোনো রিয়াকশানকে ক্যাটালাইসিস করতে পারে এনজাইম হিসাবে, কিংবা কোথাও মেমব্রেনের ভিতরে ঢুকে বসে আছে, কাউকে অ্যালাউ করছে সেলের ভিতর যেতে, কাউকে অ্যালাউ করছে সেলের বাইরে আসতে, সেটা দ্যাট ঠিক আছে। দিস থিংস ওয়াই আ প্রোটিন ক্যান ডু, why a lipid cannot do, why a nucleotide cannot do, or why a carbohydrate cannot do. প্রোটিনই কেন পারে? কারণ প্রোটিনের 4টা डायमेंशने स्ट्रक्चर है. दिस यू हैव लर्नड इन क्लास 11. प्रोटीन का 4 डायमेंशन में स्ट्रक्चर होता है. नंबर 1 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी. Primary structure is one. Protein is made up of how? What is the unit of protein? Protein is a big molecule. It is made up of many small molecules. What are those molecules known as? Anybody can say? I asked you that go through a little bit your biomolecule of class 11. If you have gone through, you will know that proteins are made up of amino acids. Chota amino acids. Amino acids से प्रोटीन बनता है. सही बात है, समझ में आ गया होगा. अमाइनो एसिड से प्रोटीन आता है. ये एसिडिक एसिड? नो, अमाइनो एसिड बेटा, नॉट एसिडिक एसिड. चेयर्स. एनीवे, अमाइनो एसिड, यस. छोटा अमाइनो एसिड ज्वाइन करता है और प्रोटीन बनाता है. When this long chain of amino acids form, it's known as peptide chain. What it is known as? Peptide chain. P-E-P-T-I-D, peptide chain. This peptide chain coils and makes alpha helix structure. That is secondary structure. Peptide chain is primary structure. This peptide chain coils like this. इससे coil हो जाता है. That, I'm so sorry, today I don't have my board ready. By next class or by next week you will have my board ready. Anyway, ऐसे coil हो जाता है. That is secondary structure of protein. There is one more secondary structure of protein apart from alpha helix, and that is known as beta pleated sheet. पर्दे देखे हो घर में? पर्दे कैसे रहते हैं? ऐसे ऊंचा नीचा, एक लंबा पर्दा खींच दिया तो ऐसा होता है ना, ऐसा ऊपर ड्रैपर के जैसा, ऐसा ऊपर ढेउ खलानो. दोज आर नोन एज प्लीटेड शीट. प्रोटीन का हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी प्लीटेड शीट भी होता है. यही बीटा प्लीटेड शीट अल्फा हेलिक्स खुद में फिर से रैप अप होके और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक क्या बताओ उसको, जैसे कागज को अभी ऐसे मोड़ दोगे. इफ यू टेक पेपर, रुको, ये मैंने कागज लिया, ये इसको ऐसे मैंने मोड़ दिया, ठीक है. इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया. इसको मोड़ने के बाद इसका एक स्ट्रक्चर बना है, देखो, ऊबर खाबर स्ट्रक्चर बना है. अब ये तो रैंडमली बना है बेटा, लेकिन प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसा रैंडमली नहीं बनता. किस तरह के, लाइक अ वुलन बॉल, यस, किस तरह के अमाइनो एसिड एक के बाद एक बैठा हुआ है.
अमाइनो एसिड तो 20 है, उसमें से 11 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का बाय द वे डिफरेंस पता है तुम लोगों को? अगर नहीं पता है तो ढूंढना, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। एनीवे, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने ऐसे ही कर दिया, रैंडमली बन गया। लेकिन अमाइनो एसिड जब एक के बाद एक जुड़ता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के बाद जुड़ेगा, तब जाके एक स्पेसिफिक अल्फा हेलिक्स बनेगा, तब जाके एक स्पेसिफिक वो रैप अप होके एक स्पेसिफिक उलन बॉल या कह सकते हो या ऐसे पेपर बॉल जैसा बनेगा। लेकिन उसका स्ट्रक्चर डेफिनेट होगा, उसके जो ग्रुप्स होंगे, जो क्लेफ्ट्स होंगे, ये जो ग्रुप्स है, ये क्लेफ्ट्स है, ऊबड़ खाबड़ जो है, ये स्पेसिफिक होंगे बिल्कुल भी। ये अगर मैं ड्रॉ करके दिखा सकता तो ज़्यादा अच्छा होता। एक मिनट रुको, आई विल ब्रिंग अ कॉपी एंड अ पेन। कॉपी पेन में ही हाथ समझाता हूँ थोड़ा सा। गिव मी 1 more minute, स्टे ट्यून्ड। वेट, okay. See, एक अमाइनो एसिड 1 linked with another amino acid 2, linked with another amino acid 3, linked with another amino acid 4, linked with another amino acid 5, linked with another amino acid 6, ऐसे करके लिंक हो गया। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। फिर जाके वो ऐसा एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है। फिर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट ऐसे होते हैं। फिर एक शीट होगा, ऐसे होते हैं बीटा प्लीटेड शीट, ऐसे ऐसे बीच में बॉन्डिंग भी होता है। एनीवे, ये दोनों मिला के ऐसा एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाए। अब ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ, इसका क्लेफ्ट, इधर का क्लेफ्ट, इधर का क्लेफ्ट, इधर का क्लेफ्ट, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है बेटा। यहाँ से बॉन्ड्स निकले हुए होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स निकले हुए होते हैं, जो तुम्हारे बुक में नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इससे यहाँ पे बुक से ऐसे ऐसे निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ है, बॉन्ड्स निकले हुए हैं। ये होता है तुम्हारा एंजाइम, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जाके एक क्या बोलते हैं उसको, सोचो एक रिएक्टेंट है ए, हम लोग बायोलॉजी में इसको कहते हैं शिट, वेट 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 वेट, रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट, यस सबस्ट्रेट। हम लोग बायोलॉजी में रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं, सॉरी सबस्ट्रेट। ये एक सबस्ट्रेट हुआ। सोचो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट जाके, ये सबस्ट्रेट ए कन्वर्ट होगा बी में, नॉर्मली कन्वर्ट होगा, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज़्यादा है। यहाँ पे अगर एक्टिवेशन एनर्जी प्लॉट करोगे, इतना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ पे रिएक्टेंट है तो यहाँ पे प्रोडक्ट है। ये बैरियर कौन क्रॉस कराएगा? एंजाइम क्या करता है, ये बैरियर को छोटा कर देता है, जो मैं बता रहा था। कैसे? वो दूसरा पाथ यूज़ करता है। डायरेक्ट बी बनने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जाओ, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ यहाँ पर ऐसे जुड़ जाओ, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्डिंग होके तुम्हारा स्ट्रक्चर बदल के तुम बी बन जाओगे। दिस इज लॉक एंड की मॉडल ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ओके, तो मेरा बात ये है कि यहाँ पे दिखने को ये मिल रहा है कि भाई ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे प्रोटीन ग्लोब्यूल्स एक साथ रहते हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन, जैसे हिस्टोन। तो इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसका ग्रूव, इसका प्लेट्स कितना, इसका क्लेफ्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रूव्स और क्लेफ्ट्स परफेक्टली तभी बनेंगे जब ये अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट सही रहेगा। और ये जब सही रहेगा,
ये तभी सही रहेगा जब यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड सही रहेगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बनना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन यू थिंक दैट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बनना। इट्स बिकम मोर देन इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू? अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसका स्ट्रक्चर अगर ऐसा नहीं होता, एक अमाइनो एसिड के बाद दूसरा अमाइनो एसिड अगर ठीक से नहीं बैठता, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड मैन? ये क्लेफ्ट ठीक से नहीं बनता तो ए बी नहीं बनता, तो शायद तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म नहीं बनता या नहीं हो पाता, तो तुमको उस चीज़ का डेफिशिएंसी होता या वो कैरेक्टर शो नहीं होता। सर कैरेक्टर शो नहीं होता मतलब? कैरेक्टर शो नहीं मतलब सोचो जैसे कि जिसका इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या सॉरी कम प्रोड्यूस होता है, उसको डायबिटीज़ है, तो एक जेनेटिक डिजीज़ हुआ ना, तो उस हिसाब से देखते हैं। या फिर फॉल्टी प्रोटीन बन रहा है तो तुमको एक डिजीज़ हो जाएगा। फॉल्टी प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड में गड़बड़ है। तो अगर इतना तक समझ में आया, फर्स्ट यू टेल मी इन कमेंट सेक्शन, इतना तक तुम लोगों को मजा आया, समझ में आया, येस और नो? फर्स्ट यू टेल मी दैट इन कमेंट सेक्शन। others please tell me. Sneha Chanda is understanding, Shiny Ghosh is understanding, others? Okay, Shayantika understood. Other two students should be there who should be saying yes or no, or if you have any problem, please write down. Okay, Shubhamita has written twice. Anyway, I don't know Deepan is doing class or not. Okay, fine, I'll move forward with it. Just give me 1 minute. Okay, so what we understand from until now, what we have discussed, whatever I have introduced, what we have discussed, what we understand is the sequence of amino acid is very important. You know what determines these sequences, from where did these sequences come? Now this is a big question to ask, from where these sequences are coming. This is a very big question to ask. Let us try to understand from where these sequences are coming. Let us try to understand. Keep that question in your mind, in one corner of your brain. Now let me tell you that this is a nucleus of a cell. In case of prokaryotes, there is no nucleus. What you see under the microscope
is this chromatin thread. What you see under this microscope is this chromatin thread. You getting my point? This is the chromatin thread and this is the nucleus. Okay. Now what is chromatin thread? That is a big question. Chromatin thread takes color, we learned that. But what is chromatin thread? Chromatin thread has two parts. Just understand this. Chromatin thread has two parts, euchromatin and heterochromatin. Actually, chromatin thread is made up of DNA and protein. Okay, euchromatin is more DNA and less histone protein. Heterochromatin is less DNA and more histone protein. Okay. Now, the thing is this. Acha, the thing is visible to you. Can you see these things clearly? Anyone please say, can you see these things clearly? Is it visible to you? Anyone please comment? I'll send you a picture of this. It is actually because of your maybe network connection. Anyway. Now, the thing is this, that if we go into DNA, to understand chromatin, you have to go into DNA. DNA is made up of nucleotides. Now, remember, we are into a question. I have asked you a question. This entire 35 minutes, what we have discussed is what determines how is enzyme, protein structure, how are they important, what are the functions they do in our body and stuff and so. Why is the specific structure of a particular protein so important, that we have discussed. And the responsible for this particular cleft and groove of the protein is the sequence of amino acid, and we are trying to answer that from where the amino acid sequences are determined. Why are such proteins like this? Why are specific proteins have specific type of structure? So to answer that, we have to study another part. That another part we are studying, then we will correlate. Now, nucleotides. Nucleotides are made up of, DNA is made up of nucleotides. Nucleotide is made up of three things. A ribose sugar. The name is ribose. It is actually a pentose sugar. Why it is called a pentose sugar? Because it is a 5-carbon sugar. A ribose sugar, a phosphate group, a ribose sugar, a phosphate group, and a nitrogenous base. And a nitrogenous base. Now, nitrogenous base are again of two types. Purines see, now it might be a little bit more clear. Purines and pyrimidines. Okay, so purines and pyrimidines. Purines are whom you know? Double ring structures are called purines. Double ring structures are called purines. And pyrimidines are whom you know? Single ring structures. Single ring structures are pyrimidines.
Got my point? So double ring structure are purines and single ring structure are pyrimidines. Purines can be adenine and guanine. Purines can be adenine and guanine. Pyrimidines can be cytosine, thymine, and uracil. These three are pyrimidines. Did you know this? See, note it down. Okay, fine. Okay, good. Now I will not go into the details of the structure of adenine and guanine and cytosine and thymine and uracil. However, you can check them in your chemistry book, part 2, class 12, biomolecule chapter. You can check them. Check there. This all the 5 structures are given. So this is what makes nucleotides. Now nucleotides will form types. Okay. Now let us try to understand that. Suppose, for example, this is the ribose sugar. We call it 1 prime, we call it 2 prime, we call it 3 prime, we call it 4 prime, and here is a CH2OH. We call this carbon a 5 prime carbon. This is the ribose sugar. Here one OH is here and H is here. Here one OH is here. Here one OH is here. Here one H is here. Here one H is here. This is the basic structure of the ribose sugar. Got my point? This is the basic structure of ribose sugar. Now with this ribose sugar, on the OH, if it is with the help of OH, it is linked to a nitrogenous base. Now the question arises, why sir, why are they called nitrogenous bases? Let's go to the back page again. The question arises, sir, why are they called nitrogenous bases? Why are you calling them nitrogenous bases? Why nitrogenous base? Because they have lot of nitrogen in their ring. If you see them, they have lot of nitrogen in their ring, and as because nitrogen has lone pair of electrons and can donate the lone pair of electron, that makes them Lewis bases. And this is the why, because of containing of nitrogen, all 5 of them. This double ring means adenine guanine, the double ring is purine, and single ring will be pyrimidine, whatever. These are not the perfect structures, but presence of nitrogen and presence of a lone pair of electron which they can donate makes them Lewis bases, and hence they are called nitrogenous bases. This is the reason they are called nitrogenous bases. Is this clear to everyone? Why are they called nitrogenous bases?
Is this clear to everyone? Okay. Now, suppose this ribose sugar is there. इस ribose sugar के साथ there is linked a nitrogenous base. This is the ribose sugar. Ribose sugar के साथ linked is a nitrogenous base. When ribose sugar and nitrogenous base is linked, sir, who is linked? Anyone can be linked. Adenine can be linked. Guanine can be linked. Cytosine can be linked. Thiamine can be linked. Or uracil can be linked. Anybody can be linked here. Anyone. Okay. And that makes it ribose sugar plus the nitrogenous base makes it a what, you know? It makes it a nucleoside. It makes it a nucleoside. So ribose sugars plus nitrogenous base is a nucleoside. Sir, then when it will become nucleotide? I think you almost know the answer. When the ribose sugar will be there, and this is the 1' carbon, this is the 2' carbon, this is the 3' carbon, this is the 4' carbon, and CH2. In place of OH, there will be O and P and double bonded to O and single bonded to O and single bonded to O. O, these two are minus charged. And nitrogenous base is linked. So the nitrogenous base plus the ribose sugar plus the phosphate group makes it a nucleotide. So this is your nucleotide. This is how is your nucleotide. Is this understood, everyone? The structure of nucleotide? Everyone understood this? Please tell me if you have understood or not understood the structure of nucleotide. That's very nice. That's very kind. Okay. Okay. Only 3 students are responding. Rajat is lost, Shayantika is lost, and Deepayan is lost. Deepayan is never responding only. Oh, okay. Shayantika, are you there? Fine. So now we will understand the structure of DNA. Now let us try to understand the structure of DNA. So up to this much you understood. Nucleotide ka structure you understood. One more thing. If in a nucleotide, suppose if in a nucleotide suppose there is phosphate linked, I'm directly doing P. I'm directly in short form writing P, but the actual structure is like this. Okay. If in a nucleotide, this is 1', this is 2', this is 3', this is 4', this 5' carbon is there. If in a nucleotide, linked is a adenine, then we call it adenosine monophosphate. We call it adenosine monophosphate. Because why? Because there is only one phosphate. If we make it 3, please understand these things properly. It is very important that you understand these things properly to understand entire, if you want to become very good in biology. If there are 3 phosphate links,
we call it adenosine ATP, adenosine triphosphate. If two phosphate will be linked, then adenosine diphosphate. So that information I hope you had. So now you know that what will be the structure of ATP, or what will be the structure of AMP, or what will be the structure of ADP. In the similarly, it can be TTP, it can be TMP, it can be TDP. Can anyone guess what it is? Thymidine triphosphate. Thymidine triphosphate, thymidine monophosphate, thymidine diphosphate. What is the difference? A के जगह में नाइट्रोजनस बेस में T रहेगा. फिर हो सकता है कि G रहे तो GTP हो सकता है, GDP हो सकता है, GMP हो सकता है. ओके, इट्स जस्ट दैट राइबोस शुगर रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, तो यहाँ पे एडिनाइन के जगह में गुएनाइन रहेगा. तो गुएनोसिन कहते हैं इसको, गुएनोसिन. गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन दिस ऐसे कहेगा. ठीक है. देन जस्ट होल्ड ऑन. ओके, देन इट कैन बी adenosine monophosphate ATP, GTP. Then it can be UDP, UMP, uridine monophosphate, uridine diphosphate, UTP. Then it can be CDP, uridine. U रहेगा तो uridine monophosphate, uridine monophosphate, uridine diphosphate, uridine triphosphate. CDP, citidine. एक चीज़ नोटिस किए हो, जितने भी पिरीमिडिन है उनका नाम डिन से ख़त्म हो रहा है, पिरीमिडिन्स. और जितने भी प्यूरिन्स है वो सिन, एडिनोसिन, गुआनोसिन. सो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. डिफरेंस क्या है? नाइट्रोजनस बेस रहेगा, एडिनाइन रहेगा और 3 फॉस्फेट रहेगा, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अगर गुआनिन रहा, राइबोस शुगर रहा और 3 फॉस्फेट रहा तो GTP. या फिर अगर गुआनिन रहा और राइबोस शुगर रहा या 2 फॉस्फेट रहा तो GDP, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट. अगर गुआनिन रहा तो एक राइबोस शुगर रहा और एक फॉस्फेट रहा तो GMP, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट. ऐसे करके आगे बढ़ेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर CDP है, सिटिडिन मोनोफॉस्फेट, सिटिडिन ट्राइफॉस्फेट, सिटिडिन डाइफॉस्फेट, ऐसे करके होगा. ठीक है. तो यू शुड कीप दिस इन माइंड. दिस इज बायोलॉजी लैंग्वेज. ये लैंग्वेज अपने दिमाग में घुसा लो एकदम अच्छे से. ठीक है, एकदम ऐसे एकदम अच्छे से कर लो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड व्हाट अबाउट दीपा एंड दैट बॉय? दैट बॉय इज नॉट देयर. ओके, शांतिका इज देयर, दैट बॉय इज नॉट देयर. सो ये एक बात है. Are you getting my point? Just I'll send you pictures of this in your WhatsApp. Just go through once. हाँ, मैंने क्या क्या बोला. Then again give me a 2 minutes mouth rest. And I'll start telling. Just hold on. I'll send you pictures. Wait. In your WhatsApp. Okay. So just go through those pictures in WhatsApp. You can minimize this. And again come back. I'll just take 2 minutes rest. Okay, everyone, let's get back to business. I took my rest. Where's my pen? Okay. So that is the main thing. Here we get it.
Now, moving forward, very smoothly and nicely. DNA में one more thing. जब मैं लिखूं A, तब क्या समझना पड़ेगा? जब मैं लिखूं G, जब मैं लिखूं U, जब मैं लिखूं T, जब मैं लिखूं C, क्या समझना पड़ेगा? A मतलब AMP, G मतलब GMP, U मतलब UMP, T मतलब TMP एंड C मतलब CMP. हम लोग क्या करते हैं अपने सुविधा के लिए AGUTC ऐसे लिख लेते हैं. अब सिर्फ A बोलेगा तो खाली नाइट्रोजनस बेस अगर कोई सोचेगा कि खाली एडिनाइन का बारे में बात कर रहा है, नो. A मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनाइन भी है, राइबोस शुगर भी है और एक फॉस्फेट है. हाँ, ATP ADP या ATP नहीं है, AMP है. तो ऐसे ये दिमाग में घुसा लो. नाउ going into the basic structure of DNA, let me make you understand. Going into the basic structure of DNA, क्या होता है? DNA का एक स्ट्रैंड होता है ऐसे, और उसके उल्टे में दो एक स्ट्रैंड्स होते, दूसरा स्ट्रैंड होता है. मतलब दो स्ट्रैंड से बने हुए होते हैं. एक स्ट्रैंड हेलिक्स बनाता है, इसीलिए दूसरा स्ट्रैंड भी हेलिक्स बना के उसके ऊपर रहता है, और इसीलिए इस चीज को कहते हैं डबल हेलिक्स. अब क्या है, एक स्ट्रैंड में एक जगह में ए है, सोचो G है, सोचो C है, C है, G है, A है, T है, A है, G है, C है, A है, T है, G है. सोचो, ठीक है. फिर क्या होगा? A के उल्टे साइड में हो जाएगा T, T के उल्टे साइड में हो जाएगा C, C में G, C में G, G में C. ये एक रूल है. A हमेशा डबल बॉन्डेड टू D होता है, G हमेशा ट्रिपल बॉन्डेड टू C होता है. Adenine is always double bonded to thymine and guanine is always triple bonded to cytosine. Always remember this. The amount of purines is always equals to amount of pyrimidines because of this reason. होगा ही तो, क्योंकि एडिनाइन एक pyrimidine है, गुआनिन एक प्यूरिन है, गुआनिन एक प्यूरिन है. एडिनाइन के साथ कौन जुड़ रहा है? एक pyrimidine जुड़ रहा है, थायमिडिन. गुआनिन के साथ कौन जुड़ रहा है? साइटोसिन जुड़ रहा है. तो A और G मिल के जितना होगा, T और C मिल के भी उतना ही होगा, क्योंकि A T के साथ इक्वल है, G अगर A T के साथ इक्वल है और G अगर C के साथ इक्वल है, जितना A है उतना ही T होगा, जितना G है उतना ही C होगा. क्योंकि A एक स्टैंड में रहेगा तो दूसरे स्टैंड में T को रहना ही पड़ेगा, G एक स्टैंड में रहेगा तो दूसरे स्टैंड में C को रहना ही पड़ेगा, G एक स्टैंड में रहेगा तो C को रहना पड़ेगा, C रहेगा तो G रहेगा, C रहेगा तो G रहेगा, A रहेगा तो T रहेगा, T रहेगा तो A रहेगा, A रहेगा तो T रहेगा. ऐसे होएगा. तो इसका मतलब प्लस करने से A प्लस G इज इक्वल्स टू T प्लस C. इसका मतलब अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ pyrimidine. ये याद रखना भाई लोग. डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes or no? Just tell me. Very good. Very good. If you have understood, then very good. Okay. Now, G, C, C ये हुआ. अब क्या है कि ये ऐसे हेलिक्स फॉर्म के रहता है. A हमेशा डबल बॉन्डेड टू T होगा, G हमेशा ट्रिपल बॉन्डेड टू C होगा, C हमेशा ट्रिपल बॉन्डेड टू G होगा, G हमेशा ट्रिपल बॉन्डेड टू C होगा, A हमेशा डबल बॉन्डेड टू T होगा, T हमेशा डबल बॉन्डेड टू A होगा, A हमेशा ट्रिपल बॉन्डेड टू G होगा. अच्छा सर, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस अगर फिक्स्ड है तो दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस भी फिक्स्ड हो गया. यस. एक स्ट्रैंड अगर मुझे पता है तो दूसरे स्ट्रैंड का भी मुझे पता होगा. यस. एंड इसीलिए इन दोनों स्ट्रैंड को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, और इसीलिए इस स्ट्रैंड्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. Isn't it nice? तो ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स.
You got my point? You understood this, I hope? Now, basically what we need to understand is that ये ऑपोजिट में कॉम्प्लीमेंट्री है वो ठीक है, लेकिन अगर मैं एक स्ट्रैंड को पकड़ूं और एक स्ट्रैंड को पकड़ के चलूं तो उसमें जो सीक्वेंस है ना, ए जी सी ए टी टी जी ए सी जी सी टी ए सी जी, इसका कोई रूल नहीं है कि ए के बाद जी ही रहना पड़ेगा, जी के बाद सी ही रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है. दिस सीक्वेंस कैन बी एनीथिंग. And here where all the variations lie, difference in the sequence of the DNA. एक DNA है, एक स्ट्रैंड है DNA का, एक स्ट्रैंड में ए टी जी सी सी जो भी है ये सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस मुझे पता है वो ठीक है, लेकिन ये जो सीरियली थ्रू आउट वन स्ट्रैंड तुम सीक्वेंस देख रहे हो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, और इसी का एक पार्ट डीएनए का एक पार्ट जीन बनाता है जिससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर फिक्स होता है, क्योंकि इस जीन के सीक्वेंस के हिसाब से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बनता है और इस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के हिसाब से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, मानो चाहे ना मानो. और इसके अंदर बहुत से प्रोसेसेस है जिसका डिटेल्स हमें ये इस क्या कहते हैं इसको, जिसका डिटेल्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. द डिटेल्स ऑफ विच वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. क्या होता है अब डीएनए का थोड़ा एक देखोगे तो सोचो, पहला एक इतना समझ में आया? प्लीज टेल मी यस सर नो सर कि इतना समझ में आया कि नहीं? ओके, वन गर्ल said yes सर, टू गर्ल said yes सर. ओके फाइन. अब अगर डीएनए को ठीक से देखोगे तो यहाँ पे 1 प्राइम है, यहाँ पे 2 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, यहाँ पे 4 प्राइम है, और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे 5 प्राइम है. किसी ने एक दिन मुझे पूछा कि अच्छा सर यहाँ पे प्राइम प्राइम करके नंबरिंग क्यों देते हो? जैसे कि ये सोचो आपका राइबोस शुगर है तो साइंटिस्ट ने से प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम क्यों, 1 2 3 4 क्यों नहीं नंबरिंग दिया? इसका रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी एडिनाइन जो है या ग्वेनिन है या साइटोसिन है या थायामिन है या यूरोसिल है वो ऑलरेडी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, तो उनके 1 2 3 4 नंबरिंग होते हैं. तो उनके 1 2 3 4 नंबरिंग और इसका नंबरिंग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए इसको 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम रहता है. और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोगों को देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं डीएनए ड्रॉ कर रहा हूँ तो 2 प्राइम में कोई OH नहीं H रहेगा, इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक डीऑक्सीराइबोस कहते हैं या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं. अब क्या होगा, इसके नीचे और एक न्यूक्लियोटाइड है, जैसे कि ये है ए के नीचे G है, तो यहाँ पे एक मैं अच्छा यहाँ पे फॉस्फोरस ड्रॉ करना चाहिए मुझे P, तो यहाँ पे एक O है, तो यहाँ पे H है, यहाँ पे 3 प्राइम में OH रहेगा, ये मत भूलना. 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, ठीक है. और यहाँ पे CH2OP है, यहाँ पे एक रहेगा, ठीक है. अब क्या होगा, ये फॉस्फेट और ये 3 प्राइम OH ऐसे बॉन्ड कर लेगा. इस चीज़ को कहते हैं फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड. और ऐसा चलता रहता है, पता है फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड. ये ए, जैसे कि मैं अगर एक सीक्वेंस ड्रॉ करूँ ऐसे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ये जो बॉन्डिंग हुआ है ये इस न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम OH से इस न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम फॉस्फेट में हुआ है. यहाँ पे भी वही है, इसका नीचे का 3 प्राइम, यहाँ पे देखो इसका नीचे का 3 प्राइम OH वैकेंट है. यहाँ पे अगर और एक मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं और एक ड्रॉ करता हूँ ऐसे,
तो इसका नीचे का 3 प्राइम OH फका रहेगा और इसका जो 5 प्राइम फॉस्फेट है वो इसके साथ बॉन्ड हो जाएगा। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे गुएनिन रहे, यहाँ पे थायमिन रहे, साइटोसिन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इस पूरे सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनता रहेगा, मतलब ये सारे बॉन्ड्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से स्ट्रैंड्स बनता है। हाँ, ये चीज जरूर पक्का है कि पहला न्यूक्लियोटाइड का ऊपर वाला जो फॉस्फेट है, पहला न्यूक्लियोटाइड का ऊपर वाला जो फॉस्फेट है वो 5 प्राइम है, ये फ्री है, ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किया। और लास्ट न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH फ्री होता है। अब तुम इसको एक्सटेंड करो, तुम बोलोगे सर और ऐड करना है मेरे को, करते रहो, ऊपर से होता रहेगा, नीचे का 3 प्राइम वैकेंट ही रहेगा। तो इसीलिए हमेशा डीएनए का एक स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, लेकिन दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। अब ऐसा क्यों? इस चीज को कहते हैं एंटी पैरेलल। लेकिन क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा क्यों 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम उल्टा क्यों? ये एक क्वेश्चन है। This question I am asking you. Did you understand up to this much? That you tell me first. Did you understand up to this much? That you tell me first. Yes, sir. Then your homework is, let us see how intelligent you are. Why is DNA anti-parallel? I want a perfect answer. Perfect, not from Google, not from Quora. You think and tell me. I will give you a hint. Check your class 12 NCERT, this chapter, molecular biology or molecular basis of inheritance, chapter 6. Check it, read it little bit. See if there is any diagram, or you can understand why is it so that one strand is 5 prime to 3 prime, the other strand is 3 prime to 5 prime. Is this clear to everyone? Did you understand my question? Did you understand my homework? Yes or no? हाँ ना बोल दो भाई। Yes sir, yes sir. Shubhamita understands a lot. Shani also understood. Up to how much did I send you pictures? Yes or no? Anyway, I'm ending this session here. And you know what is the interesting? You will get this session recorded. I mean, so once again, if you want to see the class, you can see. You just have to subscribe my channel. It will be uploaded in my channel after a few, tomorrow morning only you will be able to see it. Again, the same class. Okay? Chalo, tata, bye bye. Thank you.